किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले यू शुड हैव एन आइडिया कि उस सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, राइट? कौन सी थीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी थीम्स ज़्यादा रिपीट होती हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस हर टॉपिक से आते हैं, राइट? Good afternoon, everyone. Welcome to our channel UPSC Mentorship by Prepp IAS. This is 𝐐𝐞𝐥𝐜𝐬𝐡, Senior Mentor from Prepp IAS. So today we'll be taking forward our discussion. Last time आपको नित्या मैम ने बताया होगा एंशिएंट हिस्ट्री की स्ट्रैटेजी, राइट? सो फर्स्ट 45 डेज का जो हमारा प्लान है जिसमें आपको पॉलिटी एंड एंशिएंट हिस्ट्री एक साथ स्टडी करना है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए टुडे वी विल टेल यू अबाउट पॉलिटी की स्ट्रैटेजी क्या होगी, राइट? सो बिफोर डिस्कसिंग एनी स्ट्रैटेजी, किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने के पहले यू शुड हैव एन आइडिया कि उस सब्जेक्ट पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं, राइट? कौन सी थीम्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी थीम्स ज़्यादा रिपीट होती हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस हर टॉपिक से आते हैं, राइट? सो एज वी कैन सी, if you analyze the previous year questions, we can see that certain topics, they have been repeated a lot of times. For instance, federalism, right? Federalism से एक 2023 में a question was asked, discuss the role of finance commission, right? It's about the fiscal relations between center and states, right? तो इसमें finance commission का क्या रोल है? finance commission एक constitutional body है, राइट? तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के ऊपर भी एक क्वेश्चन हो गया, प्लस सेंटर स्टेट रिलेशंस एंड फेडरलिज्म. सिमिलरली इन 2022 अनदर क्वेश्चन वाज आस्क्ड. दिस वाज रिलेटेड टू सिविल सर्विसेज एंड द गवर्नेंस. जुडिशरी के बारे में अगर हम देखें तो यू कैन सी दैट जुडिशियल लेजिस्लेशन, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू जुडिशियल एक्टिविज्म एंड जुडिशियल ओवररीच. ओके, नाउ एक इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात यह है कि जुडिशरी, जब हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट या सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, सो इट इज़ नॉट जस्ट द फैक्ट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर बट ऑल्सो द थिंग्स इन द करंट अफेयर्स जो उससे रिलेटेड न्यूज़ में हो रही हैं, राइट? फॉर इंस्टेंस जुडिशरी, इट हैज़ द पावर टू रिव्यू द लेजिस्लेशंस, रिव्यू द एग्जीक्यूटिव एक्शंस, राइट? बट उसी डायरेक्शन में इफ समथिंग कॉल्ड जुडिशियल लेजिस्लेशन है, okay, the judicial legislation, is it antithetical to the doctrine of separation of powers, right? Or is it in tune with the constitutional principles? So that is the question being asked. Critically examine. Okay, in later sessions we will tell you critically examine के questions को कैसे approach करना है, critically analyze. All things will be discussed धीरे-धीरे एक phase में. Okay, so similarly different topics like parliamentary systems, like what are the methods used by parliament to ensure accountability. We must have heard, right, कि we have chosen for a parliamentary system of government जिसमें accountability was the main principle. Okay, and how is this accountability held? What are the different kinds of methods? Question hour is one method. Okay, so similarly there are different kinds of method, and this question was asked in 2019. As you can see, fundamental rights, again fundamental rights was again asked. 2015 में एक question था, 2017 when right to privacy judgment was there. Okay, so in this manner you will have an idea कि किन topics से किस तरीके के questions आ रहे हैं, राइट? नाउ अगर हम थीम वाइज क्लासिफिकेशन देखें तो यू कैन हैव एन आइडिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एंड बेसिक स्ट्रक्चर से वी हैड अराउंड 3 क्वेश्चंस इन दीज ईयर्स 2013, 20 एंड 14, राइट? 2022 वी हैड 1 क्वेश्चन फ्रॉम सिविल सर्विसेज. Here 2018, 23 federalism, center state relations was an important topic. Okay, now what we could observe that around the weightage of entire polity is around 18 to 20 questions are always there, right? Yeah, we often hear कि कितने questions आप directly attempt कर सकते हैं and कितने नहीं. So there will be some bounces, but there will always be certain number of questions जो आप attempt कर सकते हैं अपने basic fundamental knowledge के basis पे. So the strategy that I have given you, that we have given you, there the focus is कि आपके वो fundamental preparation strong हो, right? ताकि आप at least 15-16 questions correct attempt करते हैं. Right, now I'll tell you about these things. You can go through these. Now the sample questions, for instance, you have cooperative federalism. Again, you must have heard about competitive federalism, cooperative federalism. So what is it, right? It has become a rhetorical phase these days. Niti Aayog has used this word quite often. So what does this mean? Okay, how we can write this answer? We can introduce by writing a definition of cooperative federalism, right? This can be defined in the introduction. Okay, what we could do else is, it has become a rhetorical phase. I mean, it has become very common thing. So what are the different instances? Niti Aayog is a very good example for this, right? GST, that's another good example of cooperative federalism. So similarly, you will be also looking into the other aspects of it, fine? Okay, so similarly we had like different themes here. Now see, polity के जो themes हैं, के जो chapters हैं, they can be studied theme wise. In fact जो हमने आपको plan दिया है अभी,
अभी मैं आपको दूंगी एक 10-day NCERT प्लान, बिकॉज एज वी हैव सजेस्टेड अर्लियर कि NCERT आर द बेस. तो सबसे पहले आपको NCERT रीड करनी है. नाउ दीज आर द मेन थीम्स, राइट. जुडिशरी में जैसे वी हैव सीन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल ओवररीच, दैट्स one of the themes. Okay, now we can see the collegium system, that's always in news, different writs, right. Habeas corpus is there, manimus. Okay, very good prelims questions have been asked from these topics as well as the mains question. The role of presiding officers, the role of speaker has been already asked. Okay, what has been the role of deputy speaker, what happens if you do not appoint that position. So in all those cases the questions have already been asked. Parliamentary committees has been quite a favorite topic of UPSC, where most of the times they have been asking the role of financial committees in particular and the role of parliamentary committees in general in ensuring that parliament is working really right. Okay, so similarly as we can see executive and the other topics are there, right. So this is an idea. Now the next thing, right, the next thing is I'm giving you two plans. The first is your NCERT plan, right, that you have to complete in 10 days. Okay, so the different NCERTs that you have to read, that includes your Democratic Politics 1, Democratic Politics 1, Democratic Politics 2, and along with this you also have to refer to another two NCERTs, that is Political Theory and Indian Constitution at Work. So what I've done is कि I've merged the similar chapters, okay, the similar themes from 4 different NCERTs into one particular frame, right. So this is a 10-day plan जिसमें for example Democratic Politics 1 में एक theme है what is democracy and why democracy, right, democracy क्या है and democracy क्यों. Then Democratic Politics 2 is challenges to democracy. So this actually gives you a 360-degree idea about the concept of democracy. What is it? Okay, what is the importance, and then why we chose a democracy over the other formats, right, and what are the challenges to democracy. Similarly, on the day 2 you would be moving to the chapter 2 of Democratic Politics 1, that is constitutional design, and along with that you have to complete like Political Theory chapter 1 and Constitution why and how. Now this is very related. If I'm talking about constitutional design, right, and Constitution why and how. Okay, so how was the constitution designed? What is actually a constitution? Why do we need a constitution? And how does the constitution works, right? So similarly, other chapters, they have been merged together on the basis of themes, right? Once you are done with this, after the 10 days, we will be coming up with a session, okay, where we'll be taking up the doubts. Also, we'll be discussing certain questions, okay, from these aspects, and most importantly you have to give a test that we will be sharing, and for that you have to scan the QR code. Okay, after scanning that you will be having an access to the drive where all the tests would be there. So you have to give that test. We will discuss some of the questions from that test, and then after that what you're going to do is you're going to switch to Laxmikant. In the Laxmikant book, now you have to follow this plan. Now this is around 28 to 30 days plan. What you have to do, we have again here also we have divided the entire themes, the entire syllabus of your polity, the different themes, like for example historical background, right, and what should be the focus areas there. So the focus areas, for example, over here is regulating acts. Okay, I'll show you the questions which have been asked in prelims previous years, that will give you an idea. Then you have to focus upon making of constitution. Now this is a very important theme, fundamental rights. Here you need to focus upon the different articles and the different Supreme Court cases, because the interpretations of fundamental rights has evolved over a period of time, right. Then you would be following this plan, and similarly center-state relations. So in this manner you will be moving to the next phase, that is legislature, which we have given 3 days for it. Okay, you will be doing day 12, day 13, day 14, parliament structure, okay, focus areas and all these. Now 2 things you have to keep in mind while doing the readings. I'll tell you one by one. Similarly, judiciary, we have given here 3 days. Executive, now see, they have been merged properly like this. Okay, Prime Minister you're doing the Council of Ministers. The very next day you are actually doing this Chief Minister, right, and the State Council of Ministers, because this is going to give you an opportunity to revise the Prime Minister concept. Okay, and also it would give you the opportunity to compare the 2 positions, like how are they similar and in what aspects are they different. Okay.
So local government, miscellaneous, and then the constitutional and non-constitutional bodies, that is going to be the last theme, right? We just saw a question from the role of Finance Commission, right? So mains questions plus prelims question, both kind of questions, they come from these themes. Okay, now the two things that I mentioned that you need to take care of. Okay, the first and the most important thing, right? Before you read any chapter, first of all, complete your 10 days NCERT plan. After that, before reading the Laxmikant, let's say you're reading fundamental rights, right? So before reading the fundamental rights or before reading, let's say about the precedent, what you need to do is you need to see the previous year question, okay? That is to understand exactly what kind of questions are being framed from this topic. Okay, and then you have to go to the book, you have to read about it, underline the most important things, okay, and then come back to the questions previous years and solve them. Now, second thing that you need to keep in mind is whenever you're reading a topic, yes, any topic from the polity I'm talking about, what you need to focus upon is very important. So please see this. Now, if they're asking that if the President of India exercises his power as provided under Article 356 of the Constitution in respect of a particular state, then. Now basically what they're asking over here is when Article 356 is imposed, what all is the possibility, what all happens in a state. Now here what you need to understand is automatically is the main keyword over here. The assembly of the state is dissolved. नॉर्मली क्या होता है कि जब आप बुक को पढ़ रहे होते हैं ना तो हमारा ध्यान होता है कि हमने ये पढ़ लिया, ओके, असेंबली ऑफ द स्टेट डिसॉल्व होती है, बट डिड यू पे अटेंशन टू द वर्ड ऑटोमेटिकली? क्या ये ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होती है या इसके लिए कोई रेजोल्यूशन पास होता है, राइट? तो व्हाट आई वांट टू से इज दैट कि जब आप रीड करेंगे तो प्लीज फोकस ऑन ईच एंड एवरी कीवर्ड, राइट? बिकॉज ऑटोमेटिकली अगर हो रहा है तो इट्स अ डिफरेंट मीनिंग, और अगर ऑटोमेटिकली नहीं हो रहा है तो इट्स अ कंप्लीटली डिफरेंट मीनिंग, राइट? सो प्लीज पे अटेंशन टू द वर्ड्स बिकॉज यूपीएससी प्लेज विद द वर्ड्स, right? Second, the powers of the legislature of that state shall be exercisable by or under the authority of parliament. So is it really the parliament who would be exercising the powers of state legislature, right? Or it can be president, or it can be governor. There can be other possibility as well, right? So when you are reading this statement in the Laxmikant or in your notes, okay, do understand, do confirm that is there this authority or is there any other authority. Similarly, Article 19. Now what is important is suspended in that state. Now here in that state, that's logical, right? ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के लिए अगर ये क्वेश्चन होता तो ऑल द स्टेट्स, ये एक स्टेटमेंट हो सकती थी यहाँ पर, ठीक है? प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट. सो जब आप इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, आर्टिकल 356 आपके इमरजेंसी प्रोविजंस में आप पढ़ेंगे, तो नॉट जस्ट यू हैव टू रीड कि किस सिचुएशन में ये इम्पोज हो सकता है, किस सिचुएशन में ये इम्पोज नहीं होगा, इनके कॉन्सिक्वेंसेज होंगी. तो आप उसको ब्रॉडली मत पढ़िएगा प्लीज, बिकॉज आई हैव सीन व्हाट वी हैव सीन इज कि ब्रॉडली बहुत सारे स्टूडेंट्स, राइट, विच हु कम फ्रॉम द मेंटरशिप, नाउ लेट्स, उन्होंने जब स्टडी किया पॉलिटी, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व किया, नहीं बना, राइट, देन व्हाट वी फोकस्ड, व्हाट वी एम्फसाइज्ड इज कि आप कीवर्ड्स को एम्फेसिस करिए, आप क्वेश्चंस देखिए, उसके बेसिस पे अपनी रीडिंग करिए. एंड व्हाट वी ऑब्जर्व दैट आफ्टर वी सजेस्टेड दिस, their score, it actually improved because they were now paying attention on the right keywords, right? Now, another thing that you need to understand is कि किस टाइप के questions पूछे जाते हैं. For example, which one of the following is not a feature of Indian federalism? Okay, now this is a pretty direct question. There is an independent judiciary. Now the keyword is independent judiciary. Here, powers clearly divided, center and states, right? Unequal representation, Rajya Sabha. Now, agreement. Okay, is it really a result of agreement among the federating units, right? It's not a feature की बात हो रही है, right? It's not the state's choice जिसकी वजह से आज हम एक federal state है. Actually, it is something which was divided, which was decided actually at the center, right? So please pay attention, right? तो जब भी आप रीडिंग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है क्या, या सुप्रीम कोर्ट ने बोला है ऐसा, हमेशा से ऐसे ही था. फॉर एग्जाम्पल, सेक्युलर एज अ कीवर्ड. क्या सेक्युलर, इफ आई आस्क यू, let's frame one question over here. Now, if I ask you a question that secular के बारे में आपने पढ़ लिया, आपने basic salient features of the constitution. Now, secular जो keyword है, was it actually there in the preamble, right? या originally वहाँ पर था या amendment के through add हुआ? और अगर amendment के through add हुआ तो क्या secular provisions पहले से हमारे constitution में थे या नहीं थे, right? अगर secular provisions किसी state में, secular provisions अगर किसी state में नहीं follow होते हैं तो क्या in that case article 356
वहाँ इम्पोज किया जा सकता है या नहीं, राइट? तो मैंने दो टॉपिक्स को रिलेट करके पढ़ा. दिस इज अबाउट द एसर-बोमाई जजमेंट. ओके, सो अनदर थिंग इज दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स आपको ध्यान रखनी है किसी भी टॉपिक पे, बिकॉज इंटरप्रिटेशंस दे हैव चेंज्ड ओवर टाइम, राइट? व्हाट इज द करंट इंटरप्रिटेशन? अगर कोई स्टेटमेंट लिखी है तो आपको करंट इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसको इवैल्यूएट करना है, राइट? ओके, आई होप यू गॉट एन आइडिया अबाउट इट, राइट? सिमिलरली नाउ, जैसे एक बहुत बेसिक मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, वी हैव सीन दैट. अगर इलेक्टोरल कॉलेज की बात हो रही है प्रेसिडेंट की, राइट? सो एक्चुअली हु ऑल आर मेंबर्स ऑफ दैट ग्रुप? Is it only the elected members of the parliament, or the nominated members, or the members of legislative council, the member of that electoral college, right? So इस तरीके से आपको क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी होगी. हम जब सेशंस में डिस्कस करते हैं तो हम ये क्रॉस क्वेश्चनिंग के थ्रू जज करते हैं, एसेस करते हैं कि स्टूडेंट ने सही से वो चीज़ पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है. बिकॉज इट्स वेरी ईजी एंड इट्स वेरी कन्वीनियंट कि आप बता दें कि कंप्लीट हो गया है, बट इट्स वेरी एक्चुअली डिफिकल्ट एंड इट्स इनफैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट कि हम उसको देखें कि आपने कंप्लीट किया है कि नहीं. तो सेम चीज़ हम अपने सेशंस में करते हैं, राइट? नाउ दिस इज द थिंग, वी विल बी ब्रिंगिंग आउट सम वर्जन ऑफ इट ओवर हियर. नाउ आपने जब एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली तो उसके बाद आपको एक टेस्ट देना है जिसका क्यूआर कोड आपको शेयर किया जाएगा. आफ्टर दैट यू विल बी रीडिंग दिस फॉर 28 days, एंड आफ्टर 28 days वी विल बी कमिंग अप विद द डिस्कशन ऑफ द प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द पॉलिटी, राइट? उसके बाद आपके पास 7 days होंगे, राइट? सो फर्स्ट 10 days आप NCERT कर रहे होंगे, राइट? एंड देन यू विल बी डूइंग द टेस्ट जिसका QR कोड वील बी शेयरिंग, एंड देन द नेक्स्ट 28 days you will be doing this polity from Laxmikant. Okay, and after that we'll be coming up with the previous year questions analysis. Then you will be having a duration of around 7 days. इस 7 days में हमारी जो मेंस पर्सपेक्टिव में जो पॉलिटी के एक्सक्लूसिव टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये डायरेक्टली प्रीलिम्स के सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट मेंस पे ये सिलेबस में है मेंशन, एंड इससे मेंस पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, राइट? द रोल ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडीज, रेगुलेटरी बॉडीज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, राइट? उसके फीचर्स पे क्वेश्चन आ चुका है. सो उस पर हम अपने नोट्स रेडी करेंगे. नोट्स कैसे बनाने हैं इसके लिए वी विल बी कमिंग अप विद द वीडियो, राइट? कि नोट्स कैसे बनाने चाहिए, द राइट काइंड ऑफ नोट्स फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, right? And after that, after those 7 days, we'll be discussing some of the mains questions, the mains PYQ, right? We'll be giving the test when it is needed, when it would be helpful for your preparation. For all these resources, this PDFs, you have to scan the QR code. From there, you will be directed to a drive. From that, you can download all these resources, right? Okay. Yes. Okay, that's it. So this was it. So you now have the strategy for your polity plus ancient history. Now you have to start, right? From 21st April, you will be starting your plan. Okay, consistently आपको ये follow करना है, and regularly we'll be coming up with different sessions जहाँ हम ये progress assess करेंगे. Now just one more thing, that this is a general plan, right? Now इसमें कुछ aspirants आप ये भी होंगे जो working होंगे, right? Some may be starting in college जिनके पास थोड़ा कम time होगा, या कुछ और different situation हो सकती है. So if you want more personalized plan, we can also guide you with that, and for that you can reach out to us on the Prepp IAS, right? So we'll be guiding over there, right? So thank you for this. ओके, सो अब बस स्टार्ट करो, ठीक है? PYQs आपके मेन कंपस होंगे, मेन डायरेक्शन होगी PYQs एम्फेसिस करते हुए. सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहाँ पर आपको सारी डॉक्यूमेंट्स, आपके नोट्स मिल जाएंगे, राइट? ओके, थैंक यू. सो स्टार्ट योर प्रिपरेशन. ऑल द बेस्ट.